Good afternoon. My name is Trupti and today we are going to learn first lesson from Environmental Studies Part 2. And the name of the lesson is What is History? In this lesson we are going to learn the following topics. Why learning history is important to us. The relation of history and science. The scientific method of history. History and us. And the difference between the past and the future. So let's start the lesson. The first topic is history, a science that tells us about events in the past. Events यानी कोई भी घटी हुई घटना. Last year in standard 4th we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. लास्ट ईयर स्टैंडर्ड फोर्थ में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र और उनके द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना के कार्य के बारे में पढ़ा. The time before the birth of Shivaji Maharaj was about 400 years before now, or in other words, the time 400 years ago. All this was happened before 400 years back, or we can say 400 years ago. यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का कालखंड यानी उनका जीवन चरित्र आज के समय से 400 साल पीछे यानी 400 साल पुराना हुआ है. ये सब घटना 400 साल पहले घटी हुई है, 400 साल पूर्व घटी हुई है. फॉर अवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज. तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई घटना कितने साल पहले घटी हुई है. इसलिए हमने फॉर अवर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी हमारे सुविधा की दृष्टि से समय को यानी टाइम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऑफन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम और टुडे, टुमारो, yesterday or this year, next year. जैसे कि in our day-to-day life we use many words that indicate time. For example, now यानी अब. Now we are watching this video. Some time ago, कुछ समय पहले. After some time, कुछ समय बाद. Today, आज. Yesterday, tomorrow और this year, इस वर्ष. This year I mean 5th standard. Next year. When we use these words, we are actually measuring time in our minds. जब भी हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं तो जाने अनजाने में हम अपने मन में समय यानी टाइम के बारे में सोच रहे होते हैं. नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर द टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट. नाउ यानी आज, टुडे अभी, दिस ईयर ये सारे वर्ड्स हम प्रेजेंट को दर्शाने के लिए कहते हैं. प्रेजेंट यानी आज. सम टाइम एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर are the terms that indicate the past. Past means the time which has already gone. Some time ago यानी कुछ समय पहले, yesterday कल, last year पिछले वर्ष. ये सारे वर्ड्स और इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम past यानी भूतकाल के लिए करते हैं. After some time, tomorrow, next year are the words that indicate the future. थोड़े समय बाद, कल, अगले वर्ष ये सारे वर्ड्स भविष्यकाल यानी फ्यूचर को दर्शाते हैं. फ्यूचर यानी आने वाला समय, आने वाला टाइम. फ्यूचर मीन्स द टाइम दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट. आज के बाद आने वाला टाइम, समय यानी फ्यूचर. द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय इज द पास्ट. द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज द प्रेजेंट. द टाइम दैट इज येट टू कम इज द फ्यूचर. यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है. द टाइम हैज ऑलरेडी गॉन यानी बीता हुआ समय मीन्स भूतकाल यानी पास्ट. द टाइम दैट वी आर इन नाउ यानी अभी जो समय चल रहा है, इट मीन्स द प्रेजेंट. प्रेजेंट यानी वर्तमान काल. नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन प्रेजेंट. आप ये वीडियो अभी यानी वर्तमान काल में देख रहे हो, यानी ये समय है प्रेजेंट. द टाइम दैट इज येट टू कम, समय जिसको अभी आना बाकी है, वो है फ्यूचर यानी भविष्यकाल. नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली. द पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस. For example, if you are 10 years old today, it means that the events of your birth happened 10 years ago in the past. It means now you are 10 years old and in standard 5th. Before 10 years, you was just born. You were babies. It means 10 years ago when you was born, it was the past. Similarly, after 10 years from now, that is in future, you will be 20 years old. Yani, after 10 years, you will be 20 years old, so that time will be the future. The time gone between today and the day of your birth is your past, the past in the life of a person. यानी
हमारे जन्म के दिन से अब तक जो भी टाइम, जो भी समय बीता है, उस बीते हुए समय को भूतकाल यानी पास्ट कहते हैं। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री। भूतकाल में घटी घटनाओं का अध्ययन यानी हिस्ट्री। नाउ लेट्स सी द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। In standard 3rd and 4th, as a part of environmental studies, we have become acquainted with various sciences. The special characteristics of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere or anytime. The method of using number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. In standard 3rd and 4th, we have studied environmental science. In science, to prove or to test any facts or evidence, we have to do various experiments to check its reliability. Reliability means Vishwasaniyata. The methods which used to check or used to prove any kind of fact or evidence is called the scientific method. In history also, कोई घटना या कोई भी वस्तु की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसे साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं. There are many things that happen since our birth that we may not know about. However, our grandparents or parents or others often tell us amusing stories of our childhood. Our parents, our grandparents, or other relatives tell us many stories of our childhood. Those stories are a part of their memory. However, when different people tell us about the same event, we find the differences in their narrations. Narrations means their way of telling stories. जब एक ही बात अलग अलग लोग बताते हैं तो उन सभी के बताने में थोड़ा बहुत अंतर यानी डिफरेंस पाया जाता है. It makes us wonder which one is right. We need to examine the details of each narration carefully to decide the correctness of the fact. So, to find the correct or true fact, we have to listen these narrations carefully. We have to examine, we have to study that narrations carefully. It is not possible to conduct experiment to recreate the events that have happened in the past. इतिहास में यानी पास्ट में घटी हुई घटनाओं को फिर से दोहराना यानी फिर से रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं है. बट कुछ साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा हम उस भूतकाल में घटी घटनाओं को जांच कर सकते हैं. बट दोज मेथड्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंटिफिक मेथड्स. So, the method of presenting history is different from that of other sciences. Even so, history uses the scientific method at every stage, namely, while looking for and collecting evidence, examining the evidence, and while putting it together. इसके बावजूद कोई भी एविडेंस यानी फैक्ट को ढूंढने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, सभी एविडेंस को एकत्रित करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है. When required, help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. History is not written solely on the basis of imagination. Solely यानी केवल. When anyone research on any historical event or fact, they have to use various scientific methods to prove its reliability. इसलिए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है और इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता. Ancient objects, structures, sculptures, pots, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories, and songs remember over many generations, etc. are the sources of history. Ancient यानी प्राचीन. Ancient objects यानी पुरानी चीजें, वस्तु. Structures यानी भवन, नमूने. Sculptures यानी शिल्प, मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां. Pots बर्तन. Coins सिक्के. Inscriptions यानी उकरे हुए लेख. Copper plates ताम्रपट. Books पुराने ग्रंथ, किताबें. Manuscripts पांडुलिपियां. Manuscript means a document or book that is written by hand. Traditional stories स्मृति में बसी हुई कहानियां. Songs लोकगीत. इन सभी को इतिहास के साधन यानी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं. The sources of history are of three types: material source, written source, and oral source. Ancient objects, pots, coins, sculptures, etc. includes in material source.
Manuscripts, books includes in written source. Traditional stories and songs includes in oral source. In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. Using all these sources of history, the evidence get tested. With the help of evidence that stand this test, past events are put in proper sequence and a historical account is written. This is a scientific method. Later, examine evidence in the past, put in proper sequence, and the historical account event is written or formed. And this is the scientific method. सभी जांच किए हुए घटना एविडेंस को कालक्रम से यानी सीक्वेंस में इट मीन्स द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन आर अरेंज्ड इन सभी को एकत्रित किया जाता है और हिस्ट्री यानी इतिहास लिखा जाता है. यही वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड है. Now let's see history and us. The study of science helps us to find out the answers to many questions. For example, environmental science studied the problem of degradation of the environment. Degradation means the condition of something getting worse, pollution, etc., and looks for their solution. In the same way, every science has its own area of studies. History studies events in the past. एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करने से हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है. वैसे ही हिस्ट्री यानी इतिहास भूतकाल में घटी घटनाओं का अध्ययन करता है. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव कंसिक्वेंसेस. कंसिक्वेंसेस यानी एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप. दे रिजल्ट इन एन एनवायरमेंट दैट मे बी ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. अ पर्सन और ह्यूमन बीइंग एक्शंस, whether it is an individual or collective, that affect the environment. Sometimes it is favorable, means it's suitable or helpful for the progress of society, or sometimes may not, and this affect our day-to-day life. व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का परिणाम एनवायरमेंट यानी पर्यावरण पर होता है और जिसका परिणाम मानवीय समाज की उन्नति पर होता है. उसका प्रभाव हमारे डे टू डे लाइफ यानी हमारे प्रतिदिन के जीवन पर भी होता है. For example, if the people of village work together and help one another, the village makes good progress. However, the people cannot come together, it put obstacles or difficulties in the way of its development. History attempts to find out answers to many questions by studying the way of thinking past societies, their actions and their consequences. The study of history makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. हिस्ट्री पुराने यानी भूतकालीन समाज, सोसाइटी, लोग, उनके आचार विचार और उन सभी के परिणामों की खोज करते हैं और इतिहास के अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं. हिस्ट्री की पढ़ाई करने से हमें ये भी पता चलता है कि ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा. History thus provides us with guidelines about what we should behave today in order to shape a good future. History also teaches us how to behave in present so we can make a good future tomorrow. By telling us the life stories of great people, history also serves to inspire and to motivate us. भूतकाल के महान लोगों के चरित्र से स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करने का कार्य इतिहास करता है. The life stories of great people inspires us and motivate us. By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilizations. We also learn about the civilizations. Civilization यानी मानवी संस्कृति. मानवी संस्कृति, तभी की जीवन पद्धति, इन सभी का अध्ययन इतिहास में होता है. We learn about the progress of human civilization. We also understand how people's way of life went on changing. By studying history, we come to know various aspects of society. In history, we can also see that how the people, their lifestyle, their way of life changes by the time. Every village, city, district, state and country has its own history. हर एक गांव, सिटी यानी शहर, जिला, राज, देश, इन सब का अपना अपना स्वतंत्र इतिहास यानी हिस्ट्री होती है. Similarly, the earth, the mountains, water bodies, the animal world, mankind all have their own history.
Every science too has a history. It tells of the many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization and of the scientists who made these discoveries. The past and the future यानी भूतकाल और आने वाला भविष्यकाल. The past, present and future are linked by continuous chain of event. The past, present and future यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल विविध घटनाओं के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. For example, the Indian people fought against British government to get independence. This is a historical action. This was the past. As a result, India became an independent nation on 15th August 1947. So we can say that independence was a consequence of an action. That is, Indian people's struggle for independence. In this way, the events of today are linked with past actions. आज की कोई भी घटना उसके पास से यानी उसके पूर्व समय से जुड़ी हुई होती है. When we understand this, we realize that the future depends on the past events. This is what we learn from history. जैसे हमारा वर्तमान काल पास्ट से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही हमारा भविष्य काल यानी फ्यूचर हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ होता है और यही हम इतिहास के अध्ययन द्वारा सीखते हैं. This is what we learn from history. For example, we learn that man began to make tools from material available in nature, that he learned how to make uses of fire, and that he invented the wheels. जैसे प्राचीन मनुष्य ने अपने आसपास में उपलब्ध सामग्री से औजार बनाए, अग्नि का उपयोग करना सीखा, आगे चलकर पहिए यानी व्हील्स का इन्वेंशन किया. इन्वेंशन यानी आविष्कार. नाउ द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट्स. Technology developed further hand in hand with the physical and intellectual development of man. This process is going on continuously even today. Now the next generation of man, they invented many things that they developed themselves and this is the continuous process. Now today, in present, we are using many inventions or technologies like mobile phone, TV, camera, etc. which shows the development of mankind. भूतकाल में हुए आविष्कारों, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज के आधार पर ही भविष्य में नए आविष्कार करना संभव होता है. Inventions of today are only possible on the foundation of the discoveries and the invention of the past. So in this lesson, we have discussed the history, the relation of history and science, and the difference between the past and the future.